भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से कुछ ही दूर पर पटौदी रोड गुड़गांव में 10 अक्टूबर सन 2000 को एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का शुभारंभ हुआ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी, सह मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी तथा संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के कर कमलों द्वारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का कार्य बहुत ही शीघ्र संपन्न हुआ। इस 28 एकड़ की भूमि पर प्रकृति के सानिध्य में योग अभ्यास, योग मूल्यनिष्ठ शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था का ये अपने आप में अनूठा परिसर है। सभी वर्गों को मूल्यनिष्ठ बनाने एवं युवा पीढ़ी को यथार्थ मार्गदर्शन देने की सुविधा है, जिससे बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सके। ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूल टीचर्स एवं प्रिंसिपल्स के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कोर्स का भी प्रबंध है। यहाँ अतिथियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए आवास हेतु आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया गया है। भोजन हेतु विशाल भोजनागार भी है, जिसमें भोजन निर्माण सौर ऊर्जा के माध्यम से होता है। शुद्ध सात्विक भोजन जो तन मन को स्वस्थ रख सके, और इसके साथ ही मन की शांति हेतु योग कक्ष का भी निर्माण है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रकृति के साथ अद्भुत समन्वय है यहाँ।
Sharad, the chief engineer of the project. He's an architect. Brother Himanshu. Himanshu from Gujarat. Himanshu Thakkar. Yes. Brother Ramesh, the site engineer. How much time? His meet Baba's pictures everywhere. Yeah, the David. He's from Australia. Kumari is in Haryana dress, yeah. Costume of Haryana. Soon. Yes, they are from Bahari dress. Bahari dress. Left side. आप लोग साथ अब हम सब चंद क्षण परमात्मा पिता की स्मृति में बैठते हैं और उस सुंदर घड़ी जिसका अभी अभी
आदरणीय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के द्वारा संदेश उपलब्ध हुआ कि राजनीति, धर्म और विज्ञान, ये तीनों शक्तियों का समन्वय हमारे राष्ट्रपति के अंदर है और संसार को प्रेम और शांति का संदेश देने के निमित्त ये आत्मा है। आज के मंच के महानुभाव भ्राता निर्वैर जी, भ्राता ब्रिज मोहन जी, बीके मोहिनी बहन, डॉक्टर कार्तिकेयन जी, आप सबसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। It is a matter of great honor and privilege हमारे बीच हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। We'll all stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। It is a matter of great honor and privilege for His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, the President of India, the first citizen of India, to inaugurate the Om Shanti Retreat Center, which is Northern India campus of the Brahma Kumaris, as well as Convention on Evolution of a Good Human Being, which indeed is the crying need of our modern troubled times. And incidentally, this is the choicest topic of our respected President. It was given by him to us. We are doubly privileged and proud that both His Excellency, the Governor of Haryana, Babu Parmanand ji, and Honorable Chief Minister of Haryana, respected Shri Om Prakash Chautala ji, have also enhanced our joy with their gracious presence. This occasion has become most auspicious by the Triveni Sangam here of three Shiva Shaktis, our senior-most Dadis, Rajyogini Dadi Prakashmani, Chief of Brahma Kumaris from Mount Abu, Rajyogini Dadi Janki, Overseas Chief of Brahma Kumaris from London, and Rajyogini Dadi Hriday Moini, Joint Chief and Delhi Zonal Chief of Brahma Kumaris. So we are in the midst of Trimurti dignitaries of our country's government and Trimurti guiding stars of the spiritual world. Now I would request our Brahma Kumari sisters to present badges and the bouquets to our respected President and the dignitaries on the stage. Presentation of flowers.
And I would request Sister Asmita to present the welcome song. Sister Shanti is presenting the bouquet to the President of India. To our most respected chief guest of the occasion, Dr. Abdul Kalam, Dr. Babu Parmanand ji, the Chief Minister of Haryana. He has visited our headquarters in Mount Abu, and he believes that moral development alongside material progress is essential for holistic development of Haryana. And we are proud to say the state of Haryana is going from strength to strength under the able leadership of the Governor and the Chief Minister. Our respected brother, D.R. Karthikeyan ji, former Director General of Human Rights Commission, whom everyone salutes for uprightness and integrity throughout his career. After retirement, he has declined several lucrative offers so as to be free for devoting time for social and spiritual work. We welcome you, Brother Karthikeyan ji. Sister Mohini from Mount Abu, and Brother Brij Mohan, the Secretary of Brahma Kumari's Education Society. Now I would request Sister Asmita and the party to present the welcome song. युग पुरुष है आप पर कितने सरल निर्माण है, सादा सा स्वागत है पर भगवान के ज़मीं पे नहीं है कदम, खुशियों में गाते हैं हम। ज़मीं पे नहीं है कदम, खुशियों में गाते हैं हम। यहाँ पे पधारे है भारत के गौरव, यहाँ पे पधारे है भारत के गौरव। सौभाग्य पद्मा पदम हो, शुभम स्वागतम स्वागतम, शतम स्वागतम स्वागतम। राष्ट्र सेवा में सर्वस्व अर्पण सभी के लिए, जिनका जीवन है दर्पण। है राष्ट्र सेवा में सर्वस्व अर्पण सभी के लिए, जिनका जीवन है दर्पण। यही प्रेम तो है यहाँ खींच लाया, रतन हो। शुभम स्वागतम स्वागतम, शतम स्वागतम स्वागतम। शुभम स्वागतम शतम स्वागतम, शुभम स्वागतम स्वागतम।
जब ज्ञान विज्ञान का सम्मिलन है, प्रभु प्रीत संगीत का संतुलन है। जब ज्ञान विज्ञान का सम्मिलन है, प्रभु प्रीत संगीत का संतुलन है। मूल्यों से महका ये जीवन चमन सुंदरम। ओ शुभम स्वागतम स्वागतम, शतम स्वागतम स्वागतम, शुभम स्वागतम शतम स्वागतम, शुभम स्वागतम स्वागतम। जगत गुरु का फिर मान पाएगा भारत। अध्यात्म में था कभी जो महारत, जगत गुरु का फिर मान पाएगा भारत। प्रभु साथ है आपका हाथ है तो, प्रभु साथ है आपका हाथ है तो, मिटे सारे संशय भरम। ओ शुभम स्वागतम स्वागतम, शतम स्वागतम स्वागतम। प्रगति पंथ पर बढ़ चले अब चरण है, कथन ही नहीं कह रहे आचरण है। प्रगति पंथ पर बढ़ चले अब चरण है, कथन ही नहीं कह रहे आचरण है। कहे धरती माँ दादी माँ भी ये कहती, दादी माँ भी ये कहती, हमें आज खुशियाँ परम। ओ शुभम स्वागतम स्वागतम, शतम स्वागतम स्वागतम, शुभम स्वागतम शतम स्वागतम, शुभम स्वागतम स्वागतम। ज़मीं पे नहीं है कदम, खुशियों में गाते हैं हम। यहाँ पे पधारे है भारत के गौरव, सौभाग्य पद्मा पदम। ओ शुभम स्वागतम स्वागतम, शुभम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू वेरी मच सिस्टर अस्मिता। अब मैं आप सबके सम्मुख माउंट आबू से पधारे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमारे वरिष्ठ भ्राता निर्वैर जी को आमंत्रित कर रही हूँ। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं और आपने अपनी युवा अवस्था से अपना जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित किया। भ्राता निर्वैर जी। Om Shanti. Beloved children of the Supreme Father, in particular His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, President of India,
His Excellency Babu Parmanand, Governor of Haryana, Honorable Shri Om Prakash Chautala, Chief Minister of Haryana, revered Raj Yogini Dadi Prakash Mani ji, Chief of Brahma Kumaris, Mount Abu, Raj Yogini Dadi Janki ji, Additional Chief of Brahma Kumaris, Raj Yogini Dadi Hirday Mohini ji, Joint Chief of Brahma Kumaris, Dr. Kartikeyan ji, Brother Brij Mohan ji, Behan Mohini ji, dear Sister Asha ji, all the invited dignitaries in the audience, honorable MLAs, members of the security forces, all my dear sisters and brothers. I extend a hearty welcome to our chief guest, all the guests of honor, and all the sisters and brothers in the audience. It's a matter of great pleasure for me to be here welcoming all of you, especially the first citizen of India. As we heard in the message, godly message, who encompasses in his personality the qualities of a great scientist, and as President of India, the first citizen of India, and at the same time, he has so much concern for the children, the future generation. He's always concerned about the future of India and his vision to make India the most developed state in the world by the year 2020. Such a dreamer president of India would definitely lead India to the greatest heights it can achieve, and we welcome him. This academy has been inspired by the Supreme Father through the medium of Dadi Prakash Mani and Dadi Janki ji, who are the spiritual leaders today. Though they are in 80s, but they are all the time inspiring the young ones and all the people who come in contact, millions all over the world through 6,000 centers of Brahma Kumaris. It's not a simple thing to do such a wonderful job, not just to the nation, but to the whole world, to the whole society, to the whole mankind. That's what is needed today. The convention today on evolution of a good human being, as inspired by His Excellency the President himself, is definitely a point to ponder. He has touched the very basic, the very foundation of creation. He has inspired many youngsters. When he goes around India, he meets young children, the future generation, inspires them with such qualities, with such inspirations. That's what is needed for us today. And again, I welcome him, I welcome Dadis, I welcome all the speakers on the dais. We have to touch the very basic
nature of human beings if we want to have a better society. The Brahma Kumaris institution worldwide is doing that, making us aware of our very own true nature of peace, love, and compassion. If we can live by those qualities, I think we can do the needful for ushering in a new era of goodwill and a better society. For that, we need a lot of willpower, and that's what the sisters and brothers of this institution do by inspiring one and all, the elderly, the youngsters, and people from all backgrounds, from all fields, from all professions, that they should first become their own real selves. They are real children of God, the souls. They all belong to one God, and therefore we are all brothers in this world, or sisters and brothers. That's the message of the institution. If we can live by that, we can make this world a better place to live in. And we all should strive for that, and I think that would be the beginning of evolution of a good human being. Thank you very much. Om Shanti. Dadi Hirday Moini ji is the joint chief of this organization और बाल्यकाल की 9 वर्ष की आयु से आपने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप आज के विषय के ऊपर हम सबको चंद विचारों से अवगत कराएंगे। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। आप सब बोल सकते हो ओम शांति। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे भारत के और हरियाणा के मुख्य आत्माएं पधारी है, लेकिन उसके साथ साथ हम आप सभी सामने बैठने वालों की विशेष स्वागत करते हैं, क्योंकि आप समय निकाल करके पहुँचे हैं और आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। आज का विषय बहुत सुंदर है। विकास तो आदि से होता ही आया है, लेकिन अब प्रश्न उठा है कि मानव अच्छा कैसे बने। क्योंकि देखा जाए तो मानव में ही अच्छाई और बुराई की समझ है। इसीलिए मानव के लिए ही कहते हैं अच्छा बने, बुराई को छोड़े। तो ये सोचने की बात है कि जो हम चाहते हैं कि अच्छाई हमारे में आवे, वो कैसे आएंगी अच्छाई? मनुष्य के कर्म ही अच्छाई के तरफ ले जाते हैं, कर्म ही बुराई के तरफ ले जाते हैं। और कर्म श्रेष्ठ करने के लिए मुख्य चाहिए नैतिक मूल्य। आज भारत में सब साइंस के साधन, धन, सब कुछ है, लेकिन मानव जीवन में अगर ये नैतिक मूल्य नहीं है तो मानव का मूल्य भी नहीं होता है। आपने देखा होगा हमारे भारत के पूज्य देवी देवताएं, उनों का कितना मूल्य है। हमको तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज के चेतन मनुष्य को रहने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती,
और हमारे जो पूर्वज देवताएं हैं, जड़ चित्र है, उनों के मंदिर आप देखो कितने बड़े बड़े बनाते हैं। है तो स्थापना की मूर्ति के 3 पैरी, लेकिन कितनी उनों का मूल्य है और आज के चेतन मनुष्यों का मूल्य नहीं है। तो कारण क्या है? वास्तव में अगर देखा जाए तो मनुष्य का जो निजी संस्कार है वो बहुत शांत स्वरूप है, लेकिन अशांति आई क्यों? कहाँ से आई? आप देखेंगे तो मनुष्य ने अपने ओरिजिनल संस्कार जो है वो बदल दिए हैं संग के रंग में। किसके संग के रंग में? आप जानते हो 5 विकार जो है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिससे सभी तंग भी है, छोड़ने भी चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं, सभी को एक विकार का तो अनुभव जरूरी होगा, वो कौन सा? क्रोध। ऐसा कोई सारी सभा में है जिसको क्रोध नहीं कभी जीवन में किया ही नहीं हो? है कोई? हाथ उठाओ। है कोई? अनुभव है न सभी को क्रोध का। तो आज 5 विकार, उसने मनुष्य की जो नेचर है ओरिजिनल, क्योंकि आत्मा है हम और परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो हम आत्माएं अशांत क्यों? जैसे पानी होता है ना, आपने देखा होगा, पानी की नेचर है शीतल। कभी भी आग लगती है तो क्या याद आता है? लेकिन उसको आप आग में रखो और थोड़े टाइम के बाद आग के संग में वो पानी उबलता है, और वो अगर आपके चमड़ी में गिरे तो क्या काम करेगा? शीतलता का या जलाने का? तो आग के संग में शीतल पानी जो है वो भी गर्म बन करके वो ही काम करता है। ऐसे ही हम आत्माएं का नेचुरल संस्कार जो थे वो शांत सुखमय है, लेकिन इन 5 विकारों के कारण मनुष्य ने अपने संस्कार ओरिजिनल जो है वो भुला दिए। अभी वो अच्छा कैसे बने? हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे भ्राता जी का तो बहुत बहुत ख्याल है कि हम भारत को बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं। तो अच्छा, हम सब मिलकर के प्राइम मिनिस्टर जी को मददगार तो बनेंगे ना। तो हम सभी मिलकर के अगर एक बात करें, मैं आपको एक ही बात करने के लिए कहती हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। आजकल देखा जाता है कि मानव जो है ना, अपनी जिम्मेवारी छोड़ के दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी बहुत रखते हैं। अगर कोई भी गलती होगी ना तो सबकी अंगुली ऐसी होंगी, ये ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन अगर हर एक अपनी जिम्मेवारी समझे, जैसे किला होता है, किले में हर एक ईंट का महत्व होता है। अगर एक ईंट भी हिली तो सारा किला हिलता है। ऐसे हमारा भारत है, हम भारतवासी है और भारत से हमारा प्यार है, अपना देश है। तो इसमें हम हर एक की जिम्मेवारी है, हम अपनी जिम्मेवारी समझ करके करें तो 1 और 1 11 हो जाता है, और 1 लगाओ तो 111 हो जाता है। दिवाली में 1 दीपक जगता है और दीपमाला हो जाती है। कहते हैं श्री राम और सीता, श्री राम सीता से राम राज्य हो गया। मैं कहती हूँ यहाँ कितने बैठे हैं, ये भाई हमारे राम समान है, बहनें हमारी सीता समान है। अगर इतने भी राम सीता बन जाए तो कितना हमारा भारत हो जाए। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे, तो आप अपनी जिम्मेवारी समझो
और जिम्मेवार समझ के इस भारत का परिवर्तन करो। उसके लिए स्पिरिचुअल पावर चाहिए, वो मिलेंगी हमारे प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे परमपिता परमात्मा द्वारा। वो थोड़ा मेडिटेशन सीखेंगे तो आप में आध्यात्मिक पावर आ जाएगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। एंड नाउ आई इनवाइट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, respected Dr. Abdul Kalam ji, Dadi Prakash Mani ji, His Excellency Governor of Haryana, the Chief Minister of Haryana, all the honorable speakers on the dais to come forward and light the candles, symbolic of enlightening the entire world and enlightening the souls that we are. ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत। Thank you very much. I'm not finding appropriate words to speak about our respected brother Dr. APJ Abdul Kalam, the President of India. His personality is a rare combination of the ancient and the modern. He is a living example of universal spirituality and great scientific talent and temper. Dr. Kalam's vision is of India as a superpower in every respect. So I invite Dr. Abdul Kalam to speak to us. Dadi Rajayogini Prakash Mani ji, Honorable Governor Babu Brahmanand, Honorable Chief Minister Shri Om Prakash Chaudhary ji, Rajayogini Dadi Janaki, Rajayogini Dadi Hirday Mohini, Dr. Mr. Karthikeyan, all brothers, sisters, and distinguished friends who are assembled here. I am indeed very happy to be here. It's a beautiful place. It's beautiful because people are beautiful minds are here. People of beautiful minds are here. Beautiful minds always are creative. When there's a creative minds are there, you get a beautiful place. What we are seeing, it is really the Om Shanti Retreat Center is a beautiful place with beautiful minds and creative. Now, I am indeed very happy to be here in the divine environment of Om Shanti Retreat Center. And also it's a great honor for me to be in the midst of spiritual leaders of Brahma Kumari Academy for a Better World. The evolution of good human beings is indeed a big challenge for the world community. I was asking myself, what will be the components of such a mission? Will it consist of education system to generate enlightened citizens? That means a combination of learning with value system. This process can take place for 12 years during the child's education. This covers 1/3 of the population of our country at any point of time in our country. The second important component will be the religions graduating into a spiritual movement. And I'm very glad to tell you, the Brahma Kumari movement, it's a spiritual movement. We are very happy about it. The third and most vital component is the poverty eradication by attaining economic prosperity resulting in high component potential. Now, the question we have in front of us is, will it eliminate the international terrorism? Will it eliminate the cross-border terrorism? Will it remove the communal clashes
Above all, will it remove the violence in mind and body? Violence in body, will it remove? At this point of time, I would like to recall a spiritual hymn. It's very famous hymn emanated from somewhere from Puttaparthi. Where there is a righteousness in the heart, there is a beauty in the character. Where there is a righteousness in the heart, there is a beauty in the character. Where there is a beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is a order in the nation. When there is order in the nation, there is a peace in the world. Friends, we can see a beautiful connectivity between heart, character, nation, and the world. How to inject righteousness in the human heart? That's a real challenge for the Brahmakumari movement or any spiritual movement. This is indeed a purpose of human creation, that is divinity. What is the type of planet we live in? We are going through a complex situation as the many and many human beings are completely at war with themselves, with society, and the nation. I would like to discuss about the study and the dynamics of warfare. Friends, I have got my lecture. I don't want to read, but if you don't mind, all of you, what I'm going to say, I took it from the welcome song, what sister sang just now. So can you repeat it if I say that? Will you all repeat? Oh, okay, good. Bharat, India. You have not taken breakfast, it looks. Bharat, India, the land of spirituality, will once again be recognized as the teacher, guru of the world. As God is with us, who can be against us? So this you remember, write it and daily recite it, India will become great. Now, friends, I want to tell you, at this point in time, I would like to recall a poem written in full moonlight. There was a divine echo in the full moon night from my Creator, shaken, bewildered, and wondered. The echo engulfed me and my race. It says, you, the human race, is the best of my creation, God says. You, the human race, is the best of my creation. You will live and live. You give and give till you are united in human happiness and pain. My bliss will be born in you. Love is a continuum. Love is a continuum. That is the mission of the humanity. As we, the practitioner of love and reverence, are we the practitioner of the love and reverence for human life? I was in search for the truth when I visited various religious centers and education centers and also some spiritual centers. They are all indeed islands of beautiful work. What force can bridge? At this point of time, I thought of sharing 3 of my experiences with you. Message from Mount Abu. I have visited number of times Brahmakumari Spiritual Academy at Mount Road and Abu Road, Mount Abu and Abu Road to participate with the research program of integrated treatment of body and mind, particularly for the cardiac patient in the global hospital and research center. The program aims in alleviating the pain of cardiac patients by combination of vegetarian fibrous diet, meditation, and aerobic exercises. Definitely, Mount Abu gave a good solution for integrating mind and body. Also, I used to meet more than 5,000 high school students in this campus from all parts of Rajasthan. The beautiful environment of prayers and meditation is indeed a unique experience
Above all, the 3rd February 2002, when I visited Brahma Kumari Academy, the divine echo reverberated with a message. It was a great spiritual breeze with affirmation, Bharat, that is India, will become the most beautiful land on earth. How to make it? How to make it? How to make India a beautiful land? Then the people have to have a beautiful mind. The beautiful mind becomes good citizens. Now, I would like to share with you an important message from Tawang. The Tawang is in Arunachal Pradesh. I have visited there a few months back. It's about 3,000 meter altitude. There's a place called Tawang. It's a Buddhist monastery, and there are about 400 Buddhist monks. A very, very interesting environment, divine environment, as I see in Mount Abu and as I see in the famous retreat center here, Brahma Kumari Retreat Center here. And that was a beautiful spiritual environment. And there are students, there's a young children, there's a monk, 300 monks of very historical and traditional and cultural. So I was astonished. I was taken back by the beautiful environment, what I saw there. So I want to know what is connecting the people minds, what makes the people so transparent, so to have a beautiful minds. I went to the chief of the monk, Buddhist monk. I asked him, Your Holiness, can you give me a message, what is reverberating in this campus? Actually, when you see here unity and respect and peace and also tolerance, this is what I also saw in the Tawang. So His Holiness, the chief monk, told me, I will read to you. The respected Buddhist monk told me, India is a nation of peace. India will live as a spiritual and peaceful nation. Peace should engulf our nation. This monastery spreads, this monastery spreads a message. The message is, first and most important thing, you remove from individual, if you want to become a good human being, remove from you I and me from your mind. If you remove, monk said, if you remove I and me, you are eliminating hatred. If you eliminate the hatred, if you remove the hatred, first ego, you remove the ego. Once you remove the ego, then remove the hatred. Then if you remove the hatred, violence in mind and violence in action will get eliminated forever. If you eliminate the peace, then he said, the violence will not spring from human mind and society, then peace will blossom. I bless my nation. This is what Buddhist monk said. This is what we had the blessings in the retreat, Brahma Kumari retreat. I bless my nation. The divine message, how to remove the violence from society, was born in Tawang monastery, how to inject the great experience on young minds. Now friends, all this, finally, the transformation of religion, one is education, another is religions have to be transformed into a spiritual force, then you will get the Tawang message, you will get the Mount Abu message, and also the message of this famous Brahma Kumari Retreat Center. Now, I will like to say that the most important thing, apart from the education value system, apart from the religion transforming into the spiritual force, the third important requirement, the poverty elimination. To become a developed India, the essential needs are India has to be economically and commercially powerful, at least to be one of the 4 top nations in terms of the size and the economy. The 5 areas are identified: agriculture and food processing, reliable and quality electric power for all parts of the country, education and healthcare, information communication technology,
and strategic sector self-sufficiency. These 5 areas are closely interrelated and would lead to the national food economic security, a strong partnership among the R&D, academy, industry, and the community as a whole with the government departments will be essential to accomplish the vision. In conclusion, reverence for life is indeed a possible in real sense if a philosophical thought of reverence can be transformed into actions by empowering various components of the society. When a child is empowered by the parents at various phases of growth, the child gets transformed into a responsible citizen. When a teacher is empowered with the knowledge and experience, good human beings with value system emerge. When an individual or a team is empowered with technology, transformation to higher potential for achievement is assured. When a leader of any institution empowers his or her people, leaders are born who can change the nation in multiple areas. When the women are empowered, society with stability gets assured. When the political leaders of the nation empower the people through visionary policies, the prosperity of the nation is certain. When the religions are empowered and become a spiritual force, peace and happiness will blossom in people's heart. Such an empowered state will lead to creation of enlightened citizen with value system. Hence, I suggest a solution by evolution of an enlightened human being with combination of education with value system, religion graduating into spiritualism, and visionary policies for prosperity. Based on the core competence of India, has experience with great qualities of leadership to manage the nation of 1 billion people with various dimensions in every aspect of life. Now we should not allow any religion or any individual fanaticism to endanger our nation, because nation is very important compared to any individual or party or religion. My best wishes and greetings to you. God bless you. Thank you very much, brother. I would request Sister Munni to bring the shawl, which will be presented by Dadiji to Dr. Abdul Kalam ji. Dadiji will be presenting a shawl. What a beautiful meeting. Science meets spirituality, brother meets a sister. दादी जी ने शिव बाबा का एक फ्रेम आपको दिया है प्रसाद, और गुलजार दादी जी चीफ मिनिस्टर साहब को शॉल पहनाएंगे। दादी जी गवर्नर साहब को भी शॉल पहना रहे हैं। आई वुड लाइक टू शेयर some information with you. Dr. Kalam is a brahmachari, a vegetarian, a great scientist, a true spiritualist, an example of simple living and high thinking. Under his presidential guidance, India is sure to become the lighthouse for the world because God is with us. So no one can be against us. We, your Brahma Kumari sisters and brothers, will always be with you, brother, in your efforts for uplift of the people. Now I would request the Chief of Brahma Kumaris, Rajyogini Dadi Prakash Mani ji, to give her message. ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। आज
कितना न सुंदर शुभ दिन है जो आप हमारे सो आप सबके हमारे सो आप सबके ये प्यारा ओम शांति रिट्रीट हाउस में पधारे हो। और ये हाउस आप सब खास भारत जनरल विश्व के लिए शांति प्रिय देश है। यहाँ आकर के हर एक को शांति प्रेम लव एंड पीस ये विशेष अनुभव करना है, क्योंकि समय आया है एक तो भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो वास्तव में हमारे देश का पवित्र शुभ संदेश देता, ऐसे देवी देवता धर्म की स्थापना आप हम सबको करनी है। तो उसकी प्रेरणा यहाँ सब आके लियो, जिससे भारत सो विश्व के लिए नई शांतिमय दुनिया लावे। हमें अनुभव होता रहता कि बहुत थोड़े समय में जल्दी ही ये हमारा भारत विश्व के लिए प्रेरणा सूत्र है रहेगा, जो यहाँ ही सबको ये आके अनुभव करना है कि कैसे नई दुनिया स्वर्ग वैकुंठ में हम सभी पवित्र पूज्य देवी देवता थे और फिर ऐसे ही पवित्र पूज्य देवी देवता बनना है। तो उसके लिए जो भी हिंसक अपवित्रता क्रोध लोभ मोह वो सब त्याग देना है। तो आज दादी विशेष एक बात कहूँ, एक बात खास कहूँ, छुट्टी है, हैं? छुट्टी है तो हम कहती हूँ आज यहाँ से सब ये संदेश लियो, हमें सबको प्रेम शांति से रहना है, अर्थात क्रोध को त्याग देना है। न गुस्सा सुनो न गुस्सा करो, गुस्सा करना माना दुख देना दुख लेना। इसलिए यही गुस्सा सबसे बड़ी हिंसा है। ऐसे हिंसा का सब त्याग करके गुस्से क्रोध की जगह प्रेम लव, अरे लव सीखो तो सब लवली बनो। तो परमात्मा को कहा ही जाता है प्यार का सागर, हे प्यार के सागर के बच्चे सब प्यार प्रेम 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 सीखो। इतनी दादी की आप सबको प्रार्थना है। गुस्सा हिंसा है, गुस्सा दुख देता, उनका त्याग कर प्रेम की गंगा बहाओ।
ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। हमारे देखो इस स्थान पर सबसे पहला हमारा देश का राष्ट्रपिता पर हमारा बहुत प्यारा भाई है, हमारा बहुत भाई है। तो ऐसे भाई ने आज आपके इस स्थान का आके शुभ मुहूर्त किया, तो साथ में हमारे हरियाणा के चीफ मंत्री जी और ये हमारे गवर्नर जी आदि सभी मंच पर है। तो हम कहते हैं हरियाणा, तो मैं कहती हूँ इसको हरियाणा को सच्ची दिल से हरा भरा करो, तो ये सुंदर हरियाणा। अच्छा, आप सब पधारे, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद। कोई भी किसी की सेवा का कुछ राय सलाह हो, बड़े दिल से सब कोई राय सलाह दे सकते। ऐसे समझो ये आप सबके लिए प्यारा स्थान है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। Now I will request our brother Kartikeyan ji to propose the vote of thanks. He is well known to all of us. Om Shanti. I have so much to say, both about the Brahma Kumari movement, ORC, and our great Rashtrapati ji, but we have to enable our Honorable President to keep up his commitments. He is already running late, so I will make a very, very brief comment. We are living in a world of turbulence, and there is so much of disharmony, lack of peace, fear, so much of injustice, so much of violence. All that cannot be solved by governance alone. In 64 years' time, this great movement has spread to 85 countries with 6,000 branches. The main purpose is what you hear: unity, respect, and tolerance and peace, and the association of this great organization and the finest of our citizens, you know, the first citizen of this country, Dr. Abdul Kalam, has been one of the blessings of this, for this country. He has been closely associated with them, and I know how much of regard and admiration he has got for the Brahma Kumari movement. And the Brahma Kumari movement has been spreading the values, living values, in personal life, family life, life in society, in management, and in governance. Their theme is compassion, love, that is seva and service. The focus is on the youth to give value-based and man-making education. In essence, spirituality, which, as our Honorable President said, should be kept above the narrow confines of religion, race, language, and other considerations. The movement aims at restoring us to the original state of peace and harmony. This great center, ORC, was built and made functional in a record time by Sister Asha, Brother Brijmohan, and their devoted sisters and brothers. And the self-transformation only can lead to world transformation. In these days when people are losing faith in all systems, for the lack of role models, we are fortunate that Divine has made it possible for one of the noblest of human beings, a finest of persons, to become the head of the nation. It's our good fortune. A man who is so simple, humble, pure, transparent, honest, totally dedicated to raising the standard of living of every human being and make this strong nation strong and prosperous. We are grateful to you, sir, for your very valuable time and for your very transparent remarks from the heart, appreciating the excellent work being done by this
Dadis, brothers and sisters of this great movement, whom I know very well. They're respected all over the world. I have seen their campus in Oxford, London, New York, Washington, and also in smallest villages in nook and corners of this great country. Every one of them is so dedicated, knowledgeable, pure, acting as role models. So when India has given birth to a movement like this, we can hope that we will get over this present crisis of character and turbulence. I am sure tomorrow the nation will become strong, happy, prosperous and peaceful. Thank you very much. Om Shanti. Thank you very much, Brother Karthikeyan ji. Now we will all again stand for the national anthem, and the President will take leave from us after the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रपति जी हम सबके बीच से प्रस्थान करेंगे।